Hello friends, welcome to Language Facts. From today onwards, we start our complete HTML series. Now let's start. Today's topic is Introduction of HTML and Basic Structure of HTML. You can use comment box for your queries. Now, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used to create web pages or websites. It is a standard language. Hypertext includes images, graphics, एनिमेशन, सिंपल टेक्स्ट और लिंक्स। हम वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेजेस लगा सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, ग्राफिक लगा सकते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और लिंक लगा सकते हैं एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पे लिंक करने के लिए। मार्कअप का मतलब होता है टैग्स और एलिमेंट्स। टैग का फॉर्मेट होता है दिस एंड लैंग्वेजेस मीन्स फॉर रूल्स और रेगुलेशंस। Extension of HTML is .html or we normally use in text editor or notepad. Now, basic structure of HTML. Firstly, we write HTML on top, then our head, then our title. Let's suppose I write my web page, title close. This is a syntax of closing our tags. Now our head close. Next our body start. बॉडी में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे शो होगा। जो भी डाटा हमने लिखा, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा, इमेज लगाई, वो सब हमने वेब पेज पे शो होगा। वो हम आगे सीखेंगे कि इमेज कैसे लगाते हैं, उसको एनिमेट कैसे करते हैं। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। नाउ बॉडी क्लोज, नाउ HTML क्लोज। Now we save our file with extension .html. Now our result is this is my web page is shown here and my title is shown here.